Okay, dear students, now we are going to go for question number 6. If A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 4, 5, the number of functions f maps A to B which is not onto. Okay, to find out the number of functions which are not onto, we first need to know how many total functions are there. So let's go for it. हमारा डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में. This is my domain. My domain contains 3 elements. So total functions will be equal to 2 raised to 3 gives you 8. Total number of functions हो गए 8. Now कितने फंक्शन ऑन टू नहीं है ढूंढने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कितने ऑन टू है, फिर उसको टोटल में से हम माइनस कर लेंगे. So let us check out how many functions are actually onto functions. To check out how many functions are onto functions, I have the formula. यहाँ पे देखो onto के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कोडोमेन इंपॉर्टेंट है. कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है. So my formula suggests summation r goes from 1 to 2. 2 एलिमेंट्स है कोडोमेन में, तो r goes from 1 to 2 minus 1 whole raised to 2 minus r. Okay, multiplied by 2cr multiplied by r cube. Okay, now let's go for it. क्या होता है इसका आंसर? सबसे पहले r की वैल्यू जब हम 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म विल बी व्हाट, -1 whole raised to 2 minus 1 multiplied by 2c1 multiplied by 1 cube. Now it is a summation, so all terms will be in addition. Second term सीधा 2 है, हमारे पास 2 ही terms आएंगे इसमें, so it will be -1 whole raised to 2 minus 2 multiplied by 2c2 multiplied by 2 cube. Correct? So let us check out the answers. Your answer would be -1 raised to 2 minus 1. क्या होगा? 2 minus 1 is 1, -1 raised to 1 is -1 multiplied by 2c1. 2c1 हमें पता है 2 होता है, so into 2. 1 cube is equal to 1, so -1 into 2 will be your first term. For your second term, -1 raised to 2 minus 2, 2 minus 2 is 0. Anything raised to 0 is equal to 1, so first 1 हो जाएगा. 2c2, 2 factorial upon 2 factorial will give you 1 again, and this is going to be 8. Cube is 8. So you have -2 plus 8 will give you 6. Total onto functions कितने हैं? 6. Total functions कितने हैं? 8. Total functions 8. Total onto functions है 6. तो ऐसे functions जो onto नहीं है वो कितने बचे? 2. That is correct. Not onto functions will become what? 8 minus 6. The answer will become 2. Option A is the correct option for this one. ये सवाल ऐसे ट्रिकी होता है. जनरली लोग पूछते हैं कि कितने ऑन टू फंक्शंस होंगे. यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू गेट टू द आंसर, एंड कई बार आप आंसर में 6 लिख दोगे, बट दैट इज नॉट द आंसर. रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. नॉट ऑन टू लिखा है. नॉट ऑन टू का मतलब क्या है कि 6 को आपको टोटल फंक्शंस में से माइनस करना है. दैट इज द रीजन, दैट इज द ट्रिकी पार्ट, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. Hello dear students, now we are going to see question number 7. Question number 7 deals with the range of f maps R to R. Fx is equal to x minus integer part of x. Integer part of x is a very important function. Integer part of x जो है वो कैसे फाइंड किया जाए? आप उसमें
जब कोई इनपुट वैल्यू डालेंगे तो दिस फंक्शन will give you the output as the greatest integer less than the given integer. अब आपका फंक्शन देखिएगा, ये फंक्शन इज ऑफ द टाइप गिवन नंबर माइनस इट्स इंटीजर पार्ट. आप क्या कर रहे हो, नंबर में से उसका इंटीजर पार्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. आप कोई भी नंबर ले लीजिए. एग्जाम्पल के तौर पे इफ माई x इज इक्वल टू 5.79, okay, so x minus integer part of x क्या हो जाएगा, 5.79 minus only the integer part, that will become what, 5. My answer will become what, 0.79. Can you see the pattern here? क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप? इस चीज में आपका हमेशा इंटीजर पार्ट के साथ दूसरे फंक्शन का इंटीजर पोर्शन विल गेट कैंसिल्ड. So your answer will only contain the decimal portion. That means all but one, all your answers will contain what? Only the decimal portion. But if x is equal to 0, x minus integer part of x will give you 0. Correct? So for all the integers 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, सारे integers के लिए आंसर क्या आएगा, 0. बाकी सब के लिए आंसर क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट में. क्या कभी भी ever will you get the answer 1 or greater than 1? Never. So इसका मतलब मेरा जो रेंज ऑफ द फंक्शन है, range of my function will be what? It will contain 0. It will contain 0 and it will contain all the decimal numbers from 0 to 1 but not contain 1. 0, 1. अगर यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया then this contains 1. So you cannot do the square bracket. You have to be very careful. This will become a round bracket. So my answer is range of the function 0 to 1, square bracket and round bracket, 0 included, 1 not included. This is going to be my answer. I hope you understand the nuances in this. Thank you. Okay, dear students, now we are going to go for question number 8. Question number 8 में we are going to see a function f maps n minus 1 to n and fn is the largest prime divisor of n. Then f is what? That means उसकी property पूछी है, 1 1 है, on 2 है, 1 1 नहीं है, on 2 नहीं है, क्या है? So let's go for the basic revision. What is an on2 function? What is a 1 1 function? 1 1 function का prerequisite क्या है? 1 1 function का prerequisite ये है कि अगर आपकी दो अलग अलग इनपुट वैल्यूज है तो आउटपुट वैल्यूज भी अलग अलग आनी चाहिए. करेक्ट? योर इनपुट वैल्यूज अगर अलग अलग है, दैट मीन्स फॉर टू डिफरेंट इनपुट वैल्यूज माई आउटपुट Fn is my output, largest prime divisor is my output. कोई भी दो नंबर्स पे मैं सेम इनपुट वैल्यू, सेम आउटपुट वैल्यू नहीं चाहूंगा. कोई भी दो नंबर्स जो अलग अलग है वो इनपुट करके मेरी आउटपुट वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए. लेट्स चेक इट आउट. f of 3 क्या आएगा, लार्जेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ 3. ऐसा सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो 3 का डिवाइड करेगा. तो 3 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, उसका लार्जेस्ट प्राइम डिवाइजर भी 3 ही होगा. f of 3 will be equal to 3. Yes or no? Let's take another number. 9. 9 के फैक्टर्स कौन से है? 1, 3 and 9. इसमें से प्राइम फैक्टर कौन सा है? 3. It is the only prime factor the 9 has. And is it the largest? Obviously. So f of 9 will also become what? 3.
So for two different input values, you get the same output value, yes or no? So you will write 3 is not equal to 9, but f of 3 is equal to f of 9. Therefore, f is not 1 1. ओके, एफ फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है, बिकॉज दो अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ चुका है। तो नॉट 1 1 वाले ऑप्शंस जो है वो लास्ट दो ऑप्शन है सी एंड डी। तो यहां पे हमारा ए भी तो एलिमिनेट हो चुका है, नॉट 1 1 तो है। नॉट 1 1 में या तो नॉट ऑन टू आएगा या ऑन टू आएगा। तो नाउ कंसिडर व्हाट इज एन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया क्या है? ऑन टू फंक्शन के लिए क्राइटेरिया है रेंज ऑफ अ फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। करेक्ट? तो यहां पे इस फंक्शन की रेंज निकालते। रेंज मतलब एफ एन के आउटपुट वैल्यूज क्या क्या आ सकते हैं। सो लार्जेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ एन में एक चीज तो पक्का है कि आपके जो नंबर्स आएंगे दे विल ओनली बी प्राइम नंबर्स। सो कैन आई राइट R of f, range of f contains all elements x such that x is a prime number. Correct? What is my codomain? My codomain is natural numbers. कोडोमेन क्या है मेरा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। व्हाट डज इट इंप्लाई? रेंज ऑफ माय फंक्शन इज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ माय फंक्शन। ऑन टू का क्राइटेरिया क्या है? द रेंज मस्ट बी इक्वल टू द कोडोमेन। बट इन दिस केस यू कैन सी रेंज इज प्राइम नंबर्स, codomain is all the natural numbers which also include composite numbers. So my range is not equal to the codomain. Is the function on 2? No. We checked the function is not 1 1 and f is not on 2. Is that clear? Do you understand? ना ये function 1 1 है, ना ये function on 2 है. So my correct answer is this, C, not 1 1, not on 2. This is my correct answer. I hope you understood the question. Let's go for question number 9, dear students. If A asterisk B is equal to A intersection B on power set of X, then the identity element for asterisk is dash such that X is not a null set. Okay, so what do we have here? We have A asterisk B is equal to A intersection. अब सबसे पहले हमको क्या समझना है? What is an identity element? Identity element का क्राइटेरिया जो है let's go for identity element E. अगर E मेरा identity element है तो it must satisfy A star E should give me the original value, that is A again. Yes or no? अब अगर ये सत्य है तो फिर A intersection, बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? A star B must be equal to A intersection B. तो A star E will be equal to A intersection E. A intersection E will give me what? A again. अब मुझे बताओ A का इंटरसेक्शन किसके साथ करने पे A मिलेगा? या तो A का इंटरसेक्शन A के साथ करो या तो A का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ करो, तो ही आंसर A मिलेगा। बिकॉज A वॉज चोजन आर्बिट्ररी, मतलब A की कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वो खुद मतलब A नहीं हो सकता, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। दैट्स व्हाई इन दिस केस
E is equal to null set. What is my E? E will be equal to null set. My answer is A. I hope you understood this one. Okay, dear students, now we are going for 10th question. If A star B is equal to A cube plus B cube on the set of integers, then 2 star 3 whole square will be equal to. They are asking us for the evaluation of the question. So let's start with 2 star 3 whole square. स्टार जो होगा उसको क्या करना है हमको दोनों के इंडिविजुअल क्यूब्स का समेशन करना है. सो यू विल हैव 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब which will give you what? 8 plus 27. अभी याद रखिएगा इसका होल स्क्वायर है. So you will have square of this and the square of this leaves you with 35 whole square. 35 का स्क्वायर आप कैलकुलेट तो करोगे. आई डोंट नीड टू टीच यू हाउ टू कैलकुलेट 35 का स्क्वायर. सिंपलर टेक्निक फॉर द स्क्वायर ऑफ 35 if you want to go for is a very simple technique. यहाँ पे 3 है तो उसका नेक्स्ट डिजिट 3 plus 1 क्या आएगा? 4. You have a multiplication of this two. So 3 into 4 will give you 12. These are going to be the first two digits of the square and last digit is 5. तो उसका square हो जाएगा 25. See, this is just a calculation technique. आप अपने हिसाब से भी calculate कर सकते हो. Your answer is going to be 35 का square, which comes down to 1, 2, 2, 5. That is our option D. I hope you understood this one.